information. But I do want to highlight, how we came where we are today and some of the journey that Pakistan has had. I want to say at the very outset that FATF has welcomed and acknowledged the significant progress that Pakistan has made both in money laundering and in CFT regime. It has been recognized that Pakistan has strengthened the effectiveness of its AML-CFT regime and addressed technical deficiencies and commitments of its action plans, comprising of no less than 34 action items. As you all know, this process was a bit unprecedented, where Pakistan was going through two working plans at the same time, and therefore the higher number of action items, which was 34 in number. Pakistan, it is acknowledged, it has been acknowledged by FATF, has addressed all strategic deficiencies, and all strategic deficiencies that FATF identified in both its June 2018 and in June 2021 working plans. Pakistan completed the 2021 work action plan in advance of the deadline, and this was recognized by the members in the plenary. Pakistan is no longer subject to FATF's increased monitoring process, which means Pakistan has been whitelisted by FATF, as I've already said. It also means that Pakistan is off the grey list. To advance and promote international cooperation, Pakistan will continue to work with the Asia-Pacific group of FATF to further improve our AML-CFT systems. And this is absolutely appreciated, because it is our commitment to continue to engage with FATF at every level to make sure that the achievements, our achievements, are further go even in the same direction as we go forward. Now, I want to acknowledge over here that this truly is a result of the whole of country efforts and demonstration of a resolve to improve our domestic systems to counter money laundering and financing of terrorism and bring them at par with international standards. This would not have been possible without complete national consensus across the political spectrum. This also shows that Pakistan can achieve a lot and go through any adversity and achieve its objective if it decides to work together as a nation. To me, this is the learning lesson which shows that Pakistan has no dearth of what it can achieve, only if we all work together to put our energy in the right direction. I would like to take this opportunity to especially thank the leadership for providing strategic direction, confidence, and support to all institutions throughout the process to achieve this key national objective. The success we have achieved today is an indicator of what we can achieve when we work together with a sense of purpose and commitment. And I know there's been a consistent concern in Pakistan as to who did what. I say everybody did everything that they needed to do to make today happen. I mean at the institutional level, various institutions. I mean from the highest official in the Ministry of Finance, Foreign Affairs, Finance, other institutions, FATF Secretariat, Ministry of Interior, Police Departments, CTT departments, but the plethora of departments, institutions involved in this is unthinkable. I also want to say that the credit goes to every political institution also, which has given ownership to make Pakistan reach where it is today. So I want to be unambiguous in saying that there is no dearth of work, and nobody has been left wanting in making the effort that has been required to put Pakistan where it is today. I'm going to go later on in detail to perhaps talk about what it means for Pakistan. And what it means for Pakistan is Pakistan will be unburdened by the grey listing of FATF, which means that people can invest in your country without having to think twice about it. People can trade with your country without having to think twice about it. So this is truly a very good news, and within the context of what we want to promote in terms of economic diplomacy, I think this is really, mashallah, good timing, and I want to commend everyone who's played their part, big or small, in making Pakistan reach this momentous day. Now, in the last 4 years, you all know that Pakistan has undertaken broad-based and comprehensive legal, administrative, procedural reforms to improve all aspects of our AML-CFT regime. This includes amending laws related to any anti-money laundering and countering financing of terrorism. We also increased synergy in the system, streamlined the processes, improved interagency coordination, enhanced international cooperation with other jurisdictions and organizations,
instituted supervisory structures, created necessary administrative protocols, and allocated sufficient financial and human resources to improve our compliance with FATF recommendations. I want to say over here that today, Pakistan stands as one of the countries which has the highest number of, which is most aligned with FATF recommendations. In fact, we are on third position in going with technical recommendations that have come from FATF. I want to take this opportunity to appreciate the tireless and dedicated efforts that our national FATF team, who have done a tremendous, really tremendous work day and night for the last 4 years to meet all of FATF's difficult targets. It's not impossible, certainly difficult targets. Multiple departments and agencies, I've already said, both at the federal and provincial levels, have contributed to this national cause. And today, all of them truly, I may be the face which is giving this good news to everyone, but really, the people who have gone to work behind the scenes on this are indeed many, and they truly deserve the credit that everybody else seems to receive. I also want to say a few lines about the strategic importance of FATF and where Pakistan is today. We have said all along that partnership and association with FATF and the wider international community is rooted in our strategic objective of strengthening our economy and further improving its integration with the international financial system. We want to be seen and to remain a responsible and active member of the international community who's well aware of its international obligations. I think I have said this before, this is truly a never again moment for Pakistan. And I think the lessons learned from this is that Pakistan has become in some ways a role model for the region in having the highest number of FATF recommendations which we have already complied with. We want to make sure that we remain ahead of the curve. And I think there's broad political support and commitment at every level to make sure that we will be able to do that. I have already talked about the economic benefits of whitelisting. I think this fits in very well with Pakistan's geo-economic focus. We have talked about geo-economic focus in the Foreign Office of Pakistan, and this will enable us to be able to pursue our agenda of pushing Pakistan's economic interests, be it in trade, investment, people-to-people contact, human resource export, whatever it may be. Inshallah, this day and what our getting off the grey list will assist us in that journey and will enable us to be able to achieve all those objectives better. अब मैं थोड़ा सा उर्दू में भी कहना चाहूँगी कि हम सारे ये जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत मुश्किल कठिन सफ़र रहा है पिछले 4 सालों में पाकिस्तान फैटफ के 2 वर्किंग प्लान्स के जो एक जो 2018 में हमें दिया गया और दूसरा जो हमें 2021 में दिया गया इन दोनों वर्किंग प्लान्स के तकरीबन 34 आइटम्स थे जिन पर पाकिस्तान ने काम करना था। फैटफ एक अच्छा अदारा है लेकिन उसका काम ज़रा मुश्किल है और इसमें हमें बहुत सारी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करनी पड़ी और हमें ये नहीं सिर्फ करना पड़ा कि हम बाकियों के जितने अच्छे हो जाएं, क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में आ गए थे इसलिए हमें बाकियों से बहुत आगे निकलना पड़ा टू इंश्योर कि हम ये बता सकें कि पाकिस्तान की कमिटमेंट इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की दी गई तमाम वर्किंग प्लान के साथ और पाकिस्तान का अपना सिस्टम को बिल्ड करना ताकि वहाँ टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कानून साजी हुई जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए वो आज पूरी दुनिया में दे स्टैंड आउट एज बीइंग एट द फोरफ्रंट कि दुनिया से हम आगे आज खड़े हैं। हमारी अब ये कमिटमेंट है कि आगे जाते हुए पाकिस्तान ने ये जो जर्नी की है जो इससे हमें फ़वाइद अब मिलेंगे और जो हमें फ़ायदा हुआ है उसको हम लूज़ ना करें किसी भी पॉइंट पे। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों को फैटफ के बारे में पहले से ही पता है। So I think, Asim, with your permission, I think maybe we can go to Q&A because I think I have said enough. Thank you, madam. This is great news, big success, significant development indeed, and very timely. I think we have time for a great news, a big success, significant development indeed, and very timely. I think we have time for a couple of questions. I would invite you to identify yourself. Yes, sir. Short questions. Not multiple questions, please. एक क्वेश्चन। Yes. जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं जीएनएन में होता हूँ। ये समझा जा रहा था कि अमेरिकी सदर का जो हालिया बयान आया है वो शायद पाकिस्तान के लिए FATF में मुश्किलात खड़ी करे। क्या ऐसी कोई सूरत हाल किसी भी मौके पर बनी? देखिए
जो उसकी हाईएस्ट बॉडी होती है उसके सामने पाकिस्तान की स्टेटमेंट और पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया। फैटिफ का एक रूल है कि जो इंटरनल वहाँ पे बातचीत हो उसको हम इंटरनल ही रखें और उसको हम बाहर ना निकालें। लेकिन मैं आपको इतना यकीनन बता सकती हूँ कि पाकिस्तान को हर मुल्क हर मुल्क ने आई मीन प्रीटी मच आप सवाए एक मुल्क है प्रॉब्ली जिसने फ्लोर नहीं ली, हर मुल्क ने पाकिस्तान का सराहा, जिसमें जो मुल्क आप रेफर करें वो भी हैं, जिनसे आपको कंसर्न था वो भी हैं, और कहा कि पाकिस्तान ने जो कुछ अचीव किया है इन पिछले 4 सालों में वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उन्होंने पाकिस्तान को बेहतरीन अल्फाज में कंग्रेचुलेट किया। सो इट वाजंट लाइक ओ वी आर ग्रजिंगली अप्रूविंग पाकिस्तान गेटिंग ऑफ द व्हाइट लिस्ट। ये डिसीजन यूनानिमस था, विच मीन्स तमाम फैटिफ मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो अचीव कर लिया है, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी ऑफ द ग्रे लिस्ट एंड इनटू द व्हाइट लिस्ट। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि एक होता है कि जी हाँ आपने टिक बॉक्स कर लिया, अब हम आपको निकाल रहे हैं क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया, और एक होता है कि आप एक्नॉलेज करें कि वाकई आपने जो काम किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसमें जो आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बने हैं, जो आपका लीगल फ्रेमवर्क बना है, वो आपको दुनिया में रीजन में तो एटलीस्ट जरूर ही आगे रखता है। सो दिस वाज अक्रॉस द बोर्ड यूनानिमस, एंड आई थिंक we only got to hear really good things about Pakistan and Pakistan's journey. And ये भी कहना चाहूंगी, देखें पाकिस्तान 2 वर्किंग प्लान से एक ही वक्त में निपट रहा था। हमारा जो पहला वर्किंग प्लान था 2018 का, उसमें हमें जो टाइम दिया गया हमें उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और जो हमें 2021 का टाइम दिया गया एक्शन प्लान, सॉरी जो हमारा 2021 का एक्शन प्लान के लिए हमें जो टाइम दिया गया, हमने वो महीनों में जो काम हमने 2 साल में करना था या 1.5 साल में करना था वो हमने महीनों में करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना adequately prepared है, और पाकिस्तान की preparedness on institutional side, on legal side, on on organizational side कितनी ज्यादा हो गई है। So मैं इसको ये देखूंगी कि ये हमारे लिए एक long, arduous, tedious process रहा पिछले 4 साल। इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा because पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, इन्वेस्टमेंट आने में मुश्किल होती है etc. But eventually I think we should look at it as glass half full. This did good for Pakistan. It put Pakistan ahead of the curve. And as I always say, this must be a never again moment for Pakistan. जहाँ पाकिस्तान लीड में रहे, कभी पीछे ना आए, और कभी खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह की लिस्टिंग की तरफ जाए ना। Thank you, man. One question from you. जी, thank you, Ali Hussain, representing business. मैम, जिस तरह आपने बता दिया कि ये फैसला यूनानिमस था, तो हमने कल से जो एक इंडियन मीडिया में एक नेगेटिव कैंपेन चला आ रहा था, और ये बताया यही जा रहा था कि उनको वहाँ से जो है लीक्स जो है होती हैं, तो क्या इस रोल के हवाले से, इंडियन रोल के हवाले से थोड़ा सा अगर आप बता सकें। थैंक यू जी। मैं तो इसको सिर्फ ये कहूँगी कि एक हैबिचुअल मिलिशियसनेस के तहत आई थिंक ये कुछ किया गया। हमने इसका बहुत स्ट्रॉन्ग नोटिस दिलवाया, हमने इसके बारे में बहुत सारा एम्फसिस दिया। वो एम्फसिस ना ही नोट हुआ बल्कि इंटरनलाइज हुआ। बहुत सारे देखें, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको स्ट्रेंथन करना, इनके रूल्स और रेगुलेशंस को पूरी तरह पासदारी करना हम सब पे एज इंटरनेशनल कम्युनिटी के। हम बार बार ये कहते हैं कि एक मुल्क इर्रिस्पॉन्सिबल मुल्क की तरह, सो वो इर्रिस्पॉन्सिबल मुल्क को आप रिस्पॉन्सिबल हम तो नहीं बना सकते। आपने फैटिफ की प्लेनरी की जो स्टेटमेंट है, अगर आप उससे देखें आपको वाज़िहतन पता चल जाएगा कि जो कल फैलाया गया वो सारा मिलिशियस लाइज था। अब कोई अगर झूठ बोले उसका हम जवाब आई थिंक अल्लाह का शुक्र है अपनी काबिलियत से किया, अपनी एज एन मुल्क की काबिलियत से किया। आज उन्होंने यूनानिमसली डिसीजन आ गया है कि पाकिस्तान इज ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑन टू द वाइट लिस्ट, एंड नॉट ओनली दैट, मैंने जो बार बार आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान को एक कंग्रेचुलेटरी प्रोसेस के थ्रू गुजारा गया। मतलब हमें जो वाइट लिस्ट किया उसमें हमें बेहतरीन मुबारकबादें दी गई कि जी आपने इतना कुछ किया है कि आज आप ये जगह डिजर्व ही नहीं करते, बट यू आर एक्चुअली अहेड ऑफ द कर्व। सो आई थिंक आई वुड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन malicious lies, on habitual what are considered to be leaks, but leaks should be based on at least reality. So I think यकीनन बहुत सारे लोगों को अफसोस भी होगा, और हम ये जानते हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पोलिटिसाइज करने की प्रोसेस को कोशिश की, और बहुत सारे लोगों में अब सिर्फ एक ही मुल्क रह गया है ज़्यादा,
I think we can just say that I can say this unambiguously that India has continued to try to politicize this process. And I can also say this unambiguously that India has massively failed in being able to politicize this against Pakistan. Thank you, ma'am. Inza? Thank you, ma'am. This is Mateen Haider representing GTV News. So on India, you have already commented, but one thing domestically, as well as certain laws which have been passed in the past connected to the FATF, do you think so in the days to come, there will be the full implementation on all laws related to the terror financing and related all acts laws? Are at any stage there is any chance of any compromise or anything, because there have been always different political parties, groups, pressure. So what assurance you will give on the implementation of law, and second, what will be the benefit economically to the people of Pakistan? Thank you. This is Mateen, I believe, right? Okay, so basically, look, as far as I'm concerned, I'm unequivocally, categorically letting you know one thing. I have said at the very beginning that the reason why we are here today, why Pakistan was able to go through these really difficult action plans and be able to make all the changes that were required, was because there was broad political ownership and support through the political spectrum in Pakistan, through the various governments, through the various institutions. I think that is why Pakistan is able to be at the place today. And that also shows us that when the country gets together to be able to achieve, under the, even facing great adversity, we can achieve a lot. And to me, this is a sign which is, when Pakistan gets together, what is the limitation? What are the limits that we can cross, and how much we can work for this country? There's absolutely, to directly answer your question, there's absolutely no chance whatsoever of any type of reversal or any type of, playing around the edges and thinking around the edges or trying to reverse it or trying to impede the gains that we made. I think, in fact, what you will see is a journey which is even more focused on allowing Pakistan to continue, not only continue with the momentum, but keep the pace of the distance that we've covered. When I say we are ahead of the curve regionally, within the G20 also, there are perhaps only 5 or 6 countries which are at par with Pakistan. I'm not talking developing country, I'm talking the G20. So I think it is exceptionally important to recognize and to emphasize that there will be no backsliding whatsoever, because all of Pakistan owns this process, and none in Pakistan has any interest in any backsliding or for Pakistan to ever be in this position again. I think a country which doesn't learn its lessons from history, and Pakistan certainly is a country which is proven to have learned its lessons from history, and I have no fears that you do. You surface these fears. I don't think I have those fears. I think it's a wide ownership. Thank you. One question. Yes. अलमास सैदन नकवी, मेरा ताल्लुक रोजनामा दुनिया से है। मेरा सवाल ये है कि गुज़श्ता 4 सालों के दरमियान पाकिस्तान में 2 एक्शन प्लान फाइटर के जो हैं वो कंप्लाई किए। ये एक बीइंग ए नॉन मेंबर ऑफ फैटफ एक एक्सट्रीम स्क्रूटनी जो है वो पाकिस्तान की वो उस प्रोसेस कंप्लीट किया है। यकीनन ये बहुत एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। क्या पाकिस्तान जो है इरादा रखता है कि फैक्टिव को ज्वाइन करे? I think that's a very good question, and Pakistan has shown its ability to be able to comply with international standards within the financial frameworks, no matter how intensive and extensive they were. So Pakistan will be, inshallah, looking towards that for sure. Pakistan, as you know, already interacts with FATF in a regular basis through our membership in the APG, or what is called the Asia Pacific Group of the FATF. And yes, I think we are absolutely looking at formally seeking FATF membership. I think by the achievements that we've had in the past, we are well within our right to seek that. Thank you. Anas? Thank you so much, sir. Ma'am, Minister Anas Malik this side.
नाज़रीन, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी जिसका कौम को बहुत अरसे से इंतजार था। उसी हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए खारज अमूर हिना रब्बानी खर पेरिस में FATF के हवाले से न्यूज़ ब्रीफिंग भी दे रही थी और सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दे रही थी। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का एक और इनकलाबी फलाही इक़दाम कम आमदनी वाले खानदानों को महंगाई का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए 25.6 अरब रुपए की मालियत से इंसाफ फूड कार्ड का आगाज किया है। इब्तिदाई तौर पर 10 लाख मुस्तहिक घरानों को माहाना 2100 रुपए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन को इमदाद हर माह की 2 तारीख तक बैंक ऑफ खैबर और मोबाइल अकाउंट से अदा की जाएगी। दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिकीन करीबी इजी पैसा, यू पैसा या जैस कैश शॉप पर माहाना इमदाद हासिल कर सकते हैं। अवाम की हकीकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास से बड़ी खबर जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था वो फाइनली आ गई है। 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और हम बार बार देख रहे थे कि जायज़ा इजलास होता था और बार बार ये तवक्को की जाती थी कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बट फाइनली ये जो अच्छी बड़ी खबर है आज हम तक पहुंची है। पेरिस में 2 रोज़ा इजलास ये हुआ है और वहां से खबर ये आई है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से फाइनली निकाल दिया गया है। इसके क्या फवाइद होंगे, क्या फैक्टर्स थे इसके पीछे जिन्होंने किरदार अदा किया, उन सब पे तो बात करेंगे। लेकिन हमने देखा कि स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा ने अभी गुफ्तगू की है, वहां पर इजलास की जो सभी तफसीलात हैं उनसे भी आगाह किया, जो सारे मराहिल हैं उन पर भी बात की और साथ ही साथ ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा एफर्ट इस सारे अमल के अंदर गया है, जिसकी वजह से फाइनली हम कन्विंस करने में कामयाब हुए इस बॉडी को कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में रहने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो मॉनिटरिंग के अंदर रहे, कुछ अरसा मजीद इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के बाद पाकिस्तान का जो एक पैटर्न है बिहेवियर का वो किस तरीके से है, उस पर भी बात करेंगे कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं या उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड एट द सेम टाइम ये भी बात करेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का कुछ ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या फवाइद हासिल हो सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। फॉर्मर एम्बेसडर हैं शाहिद क्यानी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। राना साहब, पहले आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। बहुत बड़ी कामयाबी सर पाकिस्तान के लिए, और जैसे कि मैंने कहा कि ये वी हैड आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और बहुत ज्यादा दुआएं भी की जा रही थी, तवक्को भी वाबस्ता थी कि आज ही फाइनली फैसला आ जाएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि आ गया। इसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा सर? देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इससे इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा तो इमेज लिफ्टिंग का है ना जी। जो परसेप्शन था पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड वाइड, उसमें बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है। और मैं समझता हूँ बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिना रब्बानी खर की, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल की, और ख़ास तौर से ये जो गवर्नमेंट है मियां शहबाज शरीफ की, क्योंकि इनका जिस एटीट्यूड से और मेहनत से इन्होंने इसको परसू किया है, causing least offensive against the people who were participating. पहले हम जो पिछला हमारा सेटअप था, हम लोगों को ऑफेंड ज़्यादा करते थे, परसुएट कम करते थे ड्यू टू आवर एटीट्यूड। एक तो ये बात बड़ी हुई। दूसरा ये है कि हम चूँकि सेनेटर, मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ, जो भी इनेक्टमेंट्स हुई हैं, इनेक्टमेंट्स बड़ी मेहनत से की गई हैं और उससे भी ये FATF के मेंबर्स जो हैं वो सारे कन्विंस हुए कि ये पाकिस्तान रियली इज ट्राइंग टू परस्यू दिस इशू विद एब्सोल्यूट बोना फाइड इंटेंशंस। अब इसके जो जी
اب اس کے جو پازیٹیو ریمیفیکیشن ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ساری دنیا میں بڑھے گی. پہلے تو یہ تھا نا طرح طرح کے الزامات لگتے تھے ایز بینگ سپورٹر آف ٹیررزم. وی ور نیور دی سپورٹر آف ٹیررزم, وی آر وکٹم آف ٹیررزم. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی اب اٹ از اے سی چینج ایز فار ایز پاکستان امیج از کنسرن. اس کا ہر طرح سے فائدہ ہوگا, انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, گڈ ول کے لیے, کوآپریشن کے لیے, میوچل کوآپریشن کے لیے. اٹس ملٹی ڈائمینشنل اس کے بینیفٹس ہوں گے پاکستان کو. میرا تو یہ پوائنٹ ہے, اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک ہے, آف کورس اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے اس فیصلے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے ایک تو اظہار تشکر کیا ہے, فورن آفس کو شاباش دی ہے, ہنا ربانی کھر صاحبہ کو, بلاول بھٹو صاحب کو, فورن آفس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی, اور پوری قوم کو بھی پرائم منسٹر کی طرف سے مبارکباد کا جو پیغام ہے وہ اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پر فلیش ہو رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, جب اس طرح کی آرگنائزیشنز کی ہم بات کرتے ہیں اور اس طرح کی ریویوز کی ہم بات کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 2 روزہ اجلاس تھا, ریویو کے اندر رہا, یہ معاملہ ویسے بھی مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے, ان کی ایک ٹیم بھی پاکستان آئی تھی جائزہ لینے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی حال میں یہ موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی اس کے بعد جو ایک ایکٹیو ڈپلومیسی ہم نے ورلڈ اوور دیکھی, پرائم منسٹر کی طرف سے بھی, فورن منسٹر کی طرف سے بھی, ڈو یو تھنک کہ اس نے بھی کوئی کردار اس سارے معاملے میں ادا کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کا سب سے بڑا کردار اسی کا ہے. آپ نے کام کیے, محنت کی, انیکٹمنٹ کی, لاز بنائے اور پریکٹیکل ایفرٹس کی آپ کے ڈپارٹمنٹس نے, جو لا اینڈ آرڈر کے لیے اینٹی نارکوٹکس اور اینٹی ٹیررسٹ جو ہمارے سارے آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے بہت محنت کی. آرمی نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, اس کے ریزلٹس بھی ان کو پتہ ہے, اور انہوں نے بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ اور انالیسس کیا ہے ہماری ساری ایفرٹس کا. ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز باقی ملکوں سے زیادہ ہیں because we are a Muslim country and we are the only Muslim atomic power. اس لیے ہمارے اوپر ان کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ چینج جو ہے بہت بڑی چینج ہے, یہ جس سے چینج آف ہارٹ ایز ویل ایز فار ایز دا انٹرنیشنل کمیونٹی از کنسرن. اس میں بہت بڑا رول ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کا, کہ ہم یہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی بات ہو بھی نہ تو ہم کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, اس سے تو انوائنس پڑتی ہے نا. ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے یہ بڑی پرسویسو ہوتی ہے, بڑی کنونسنگ ہوتی ہے, بڑی سافٹ ہوتی ہے, انڈائریکٹ ہوتی ہے. تو یو کانٹ بی crude with the international community. Otherwise بھی جو crudity ہے that بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اجازت دیجیے گا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سابق سفیر ہیں کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر میں سب سے پہلے تو اٹس اے بگ نیوز فار پاکستان, FATF کی گرے لسٹ سے فائنلی ہم 2018 کے بعد جو ہے وہ نکل گئے ہیں. سر سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کے لیے اگر ایکسپلین کر دیجیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان پر. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو پاکستان جس کے لیے پاکستان نے کئی سالوں سے کوشش کی, لاز سے جن میں امینڈمنٹ لے کر آئے, ہم پارلیمنٹ کے تھرو لے کر آئے, ہم نے بہت سارے لاز کو چینج کیا تاکہ ہم جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گلوبل یہ واچ ڈاگ جو ہے ٹیرر فنڈ, یہ آپ کو واچ کرتا ہے کہ جی کیا منی لانڈرنگ یہاں ہو رہی ہے کہ نہیں. یہاں جو ٹیرر گروپس ہیں پاکستان کے اندر تو خیر ہیں یا نہیں ہیں, یہ کیا وہ پیسے یہاں سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ جو ایکٹیو ہیں کہیں سے پیسہ پوسا تو لیتے تو ہے نا یہ. تو یہ ہماری بینکنگ لاز جو ہیں وہ چینج کی گئی, کیونکہ اصل میں گلوبلی جو ٹیررزم ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے جس کے لیے اس کو کرب کرنے کے لیے بہت سے قانون چاہیے اور یہ گلوبل ایفرٹ چاہیے ان کو روکنے کے لیے. کیونکہ پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ٹیررسٹ گروپس میں جو ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف, ایک تو الٹ بات یہ ہوگی کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں کئی سالوں سے ٹیررزم کو, لیکن ہمارے اوپر یہ FATF نے کیا. چلے نیور دی لیس ہم نے 4 سال کی کوشش کے بعد منی اپنے قانون میں اپنے لے کر آئے. اس سے اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں اب ہم دیکھیں نا, ہم پیسہ بھی ہم جو لون لیتے ہیں, چیزیں لیتے ہیں, لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک کے اندر کیا قانون جو ہیں, بینکنگ لاز ہیں, منی لانڈرنگ لاز ہیں, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں کہ نہیں. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نکل چکا ہے, ہمارے لیے انویسٹمنٹ کی بھی آسانی ہو جائے گی, لون لینے وہ بھی آسانی ہو جائے گی. لوگ جو ہمارے اوپر جو یہ کئی میجر لگائے گئے تھے
وہ بھی اب ختم کر دیے گئے ہیں, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے. بالکل ہم نے کوشش کی ہے. جیسے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان ہے سید حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آلسو میں آپ کی جانب آتی ہوں, لیکن ذرا شاید کیانی صاحب بات کرتے تھوڑا سا انہی سے مزید کامنٹ جو ہے میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ٹیکنیکلٹیز کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سارے معاملات کو, فرسٹ ہینڈ ڈیل کرتے رہے. سر تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اور بات کیجیے گا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے تو نکال دیا لیکن مانیٹرنگ کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا آپ. جی شاید صاحب وہ دیکھیں, اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں نا, بات یہ ابھی جو بھی آپ کے جو فون پہ بات کر رہے تھے اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. نیچرلی اسپیکنگ جو یہاں پر بڑے بڑے ملک ہیں جن کا اس کے اندر اسٹے ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہوا, فرانس ہوا, دوسرا, ان کو بھی دیکھیں نا, ہم نے وی ہیو ٹو کیپ دیم اپنے ساتھ رکھنا ہے, ان کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ ریئلسٹ ورلڈ کے اندر آپ دیکھا جائے تو صرف یہی نہیں کہ آپ نے قانون ٹھیک کر دیے جو چاہے, وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ملک ہیں جن کو ناراض نہ کیا جائے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی دیکھیں نا, IMF میں ہم چاہتے ہیں اور ہمیں لون چاہیے, ہمیں ری شیڈولنگ چاہیے, اس کے لیے ان کی سپورٹ چاہیے, اس لیے کہ ان ملکوں کا وہاں پر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر بہت بڑا سے ہے. اب وہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نکال تو آپ کو دیا ہے, بلکہ ول کیپ آن واچنگ یو, کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ قانون تو آپ کے ہیں, قانون تو بنے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس قانون کو آپ کہیں قانون ہونے کے باوجود جو اس قسم کی گروپس ہیں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ نہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور وہ اس کو کیا نام انڈرمائن کریں. تو یہ آپ کو یہ بہت ضرور کرتے رہیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم واپس چلے جائیں گرے لسٹ میں یا بلیک, خدا نہ خاصا, لیکن دے کیپ آن واچنگ. اس لیے ہمارے ملک کے بھی پولیٹیکل اور جو دوسری سیکورٹی لیڈرشپ, بالکل ٹھیک ہے سر. آف کورس اللہ نہ کرے کہ ہم واپس کسی بھی اس طرح کے اسٹیٹس پہ, لیکن تھوڑا سا اس پر بھی بات کیجیے گا کہ اس طرح کے معاملات جب انڈر ریویو ہوتے ہیں, ان پر بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ خبریں آتی ہیں کہ بڑی ایکٹیو لابینگ کی جا رہی ہے ٹو کیپ پاکستان آؤٹ آف دیز تھنگز. یہ جو پریویلیجز ہیں وہ پاکستان کو حاصل نہ ہو سکیں اس کے لیے. ایک تو یہ کہ بھارت کی لابینگ کی کتنی ناکامی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے, اور یہ جو مانیٹرنگ کا پیریڈ ہے اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لابینگ جاری رکھیں گے؟ جی شاید کیانی صاحب آپ ہی سے بات کری ہوں سر. ہلو جی شاید کیانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک انڈین اوپینین کا تعلق ہے, انڈیا کی جو لابی ہے باہر, وہ تو ایکٹیو ہے. ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے؟ بالکل نہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے ٹوز پہ رہنا پڑے گا, ہمیں واچ کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ یہ ہے کہ چائنا نے بھی اس وقت بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا, جب انڈیا نے نیگیٹو وہ ایک اپنے بیچ میں لانے کی کوشش کی. تو ہمیں یہ بہت واچ کرنا پڑے گا. انڈیا سے کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو کچھ سپورٹ کریں گے یا پازیٹیو اوپینین آپ کو لے کر آئیں گے. اور اس دفعہ ان کی لابی نے کام نہیں کیا, اس لیے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ہم یہ قانون لے کر آئے, امینڈمنٹ لے کر آئے, اور پھر ہم نے اپنی یہ جو سپورٹ جو بڑے امپورٹنٹ جو ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہم نے اس عرصے میں 6-7-8 مہینے کے اندر بہتر کیے. اب ان کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے. کبھی انڈین لابی نے کام نہیں کیا, کبھی کام نہیں کیا ان کی لابی نے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک دو اور بھی ایشوز ہیں اس فورم کے حوالے سے جن پر آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آج کا دن بہت ساری اہم خبریں ہم نے دیکھا کہ آتی رہی ہیں صبح سے لے کر ابھی تک, اور کچھ سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی آپ سے آپ کی رائے لوں گی, لیکن اس وقت ایک بہت بڑی خبر ہے, اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, اس پر آپ پہلے کامنٹ کر دیجیے گا. پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے, اور ابھی ربانی کھر صاحبہ کی پریس ٹاک بھی پیرس سے براہ راست ہم لوگوں نے سنی ہے. اس اچیومنٹ کے اوپر سر کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کو چیئرمین بلاول بھٹو کو, پرائم منسٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں ہم گرے لسٹ پہ نکلے. بے شک یہ کوئی ایک دو روز کا کام نہیں تھا, اس میں کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا, اور پاکستان کے تمام اداروں نے میں بڑا اپنا رول پلے کیا. اس کی لیجسلیشن ہوئی, سارا ہوا, اور بالآخر یہ اس میں جو ہے معاملہ حل ہوا اور سیٹ اپ سے باہر نکلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں, سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر اعتماد کی فضا نہ ہوتی, اگر اس قیادت پہ اعتماد نہ ہوتا, تو یہ پھر بھی نہیں نکل سکتے تھے.
तो ये मैं चेयरमैन बिलावल को तो इस पे क्रेडिट जरूर दूंगा कि उनकी जो पिछले 2-3 माह में काविशें थी उससे काफी पाकिस्तान जो है वो ऊपर आया है और पाकिस्तान जो आइसोलेशन पोजीशन में था, जबकि इंडियन जो उनकी लॉबिंग थी और सारा कुछ जिस तरीके से उन्होंने वो माहौल पैदा किया हुआ था और वो अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए सबसे ऊपर नजर आते थे। अब उन्हें आप देखें कि चाहे खेल का मैदान हो चाहे FATF का इशू हो, तो पूरी जो दुनिया है वो मान रही है और उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। और अभी आप ही बात कर रहे थे मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी बुनियाद से कोई मुस्तकिल करीब में कोई ऐसा फैसला आने वाला है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि क़यादत जो है वो बड़ी अज़्म और पुरइत्माद है। अल्लाह बेहतर करेगा। तमाम रास्ते जो है वो पाकिस्तान के लिए खुलते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा सर। मैं जरा राना साहब से भी इसी नुक्ते पे कमेंट ले लूं, क्योंकि बात अभी आपने मुर्तज़ा साहब की सुनी, वो ये कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग कोई इस तरह का मामला नहीं है, हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे और ये बेहतरी की तरफ बात जाएगी, लेकिन स्टिल एक फेज तो है, उसे गुजारना है, उसमें मोहतात रहने की जरूरत है। और जो मैंने सवाल अभी शायद क्यानी साहब से किया था कि कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो कि अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, जिसमें भारत शामिल है, एक लॉबिंग भी पाकिस्तान के खिलाफ चल रही होती है, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा सर ये वाला जो एक फेज है? देखिए जी, भारत ने तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है नुकसान पहुंचाने के लिए और वो करते रहेंगे। ये एक परपेचुअल चैलेंज है उनकी तरफ से, जो हमारे लिए हमेशा से बड़ा इरिटेंट रहा है। लेकिन विद बेटर पॉलिसी, और जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा है, जैसे मैंने पहले भी, विद स्माइलिंग फेस यू आर गेटिंग इन टच विद द फॉरेन डिप्लोमेटिक कोर। तो आप देखते हैं, अभी आपने एक और चीज़ भी एक्सपीरियंस की, जो पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है विद द फॉरेन